Hello, students, welcome. This is Jyoti Rajput, and today we are going to talk about the functions of plasma membrane. So, there are a number of functions of plasma membrane which are we are going to study in this video. So, the very first function of plasma membrane is protection. So this is the plasma membrane of the cell. So suppose this is a cell और ये जो है this is the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज द वन विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बैरियर. सो सेल के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और सेल के अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो उसको सेपरेट करके रखता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म है सेल्यूलर ऑर्गेनल है दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ सिलेक्टिव परमिएबल in nature. Only selective things can enter inside the cell. मतलब कि जो restricted molecules they will always be out of the cell. दूसरी बात है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है it also controls the rate of movement of molecules inside and out of the cell. कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक और लेयर नजर आती है that is the glycocalyx. It is the one which is going to protect the cell from the ionic and mechanical stress. सो इस तरीके से जो है ये बैरियर की तरह काम करेगा एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम नंबर ऑफ पैथोजेंस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज शेप. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल में तो एक तरीके की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है. And here, this is the plasma membrane which is helping in attachment of the cytoskeleton. Cytoskeleton ये भी structural support provide करते हैं सेल को. तो plasma membrane के साथ ये cytoskeleton elements भी present है, attached हैं. And whenever we see the cells, suppose ये first cell है, ये second cell है, ये third cell है, you can see there are some cellular junctions. So एक cell दूसरे cell के साथ attached रहते हैं because of the plasma membrane. Plasma membrane के ऊपर कुछ cellular junctions होते हैं due to which these cells they are attached to each other, firm attachment. And here this is how it is helping in maintaining the shape of the cell. Further, third function है plasma membrane का that is cell recognition and signaling. जो सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर द वन विच इज एबल टू रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द सेल. सो यहाँ पर ये जो सेल है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कि सेल जो है दे आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्योंकि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. सो इस तरीके से काफी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव कर सकता है सेल. सो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस होते रहते हैं दे बाइंड टू द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही स्पेसिफिक सिग्नल्स ही इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होंगे और आगे जो है उसका इंफॉर्मेशन आगे की तरफ प्रोसीड होगा. सो ये जो रिसेप्टर्स हैं दे कैन बी मेड अप ऑफ प्रोटीन या तो वो कार्बोहाइड्रेट के बने होंगे बट दे आर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये काफी मेजर कंपोनेंट है विच हेल्प इन द सेल रिकग्निशन असेंबली. तो जब भी कोई भी सिग्नल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस देखने मिलेंगी और फर्दर ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है दे हेल्प इन द सेलुलर प्रोसेसेस लाइक द मेटाबॉलिज्म मूवमेंट. सो द सेल surface, so on the surface of the cell the receptors they are present, they play a very important role in number of cellular processes. They receptor they can be made up of oligosaccharide also they are present on the surface of the plasma membrane which is helping which is participating in the cell cell interaction. अगर कोई दूसरा सेल है किसी दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये रिसेप्टर्स जो है दे आर द वन विच आर गोइंग टू हेल्प. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज एनर्जी ट्रांसडक्शन. There are some of the enzymes which are present on the plasma membrane जो कि convert करते हैं one form of energy को in another form of energy. That is called as energy transduction. जैसे कि एग्जाम्पल आता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ट्रांसडक्शन करता है एनर्जी का. इट कन्वर्ट्स द सन एनर्जी into the chemical energy that is a carbohydrate and it is taking place because of some pigments. सो whenever we talk about the bacterial cell जैसे bacterial cell हैं तो उनके plasma membrane के ऊपर जो है there are some of the pigments present which converts the sun energy that is a light energy into the chemical energy. Okay, so you can see uh, the carbohydrate and fats these are the chemical energy which is further it is going to produce the energy that is the ATP and ATP it is going to be used by the cell. जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एटीपी प्रोड्यूस करते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया.
The next function is the antigen specificity. जब हम आरबीसीज की बात करते हैं, दीज आर द आरबीसीज, तो उनके सरफेस के ऊपर, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजेंस नहीं होते। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। दे कैन बी मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, या तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड के भी बने हो सकते हैं। सो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, दे आर प्रेजेंट ऑन द surface of the cell membrane, or you can say plasma membrane, which determine the antigen specification of the cell. So different blood group system, they have different antigen based on the antigenic properties of the erythrocytic cell membranes. Now we will talk about the hormone transport. There are number of hormones present in the body. So हर एक cells की ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती, हर एक cell की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। So जिस हार्मोन की जरूरत होती है सेल को, दे शो रिसेप्टर्स, एंड दिस इज हाउ द हार्मोन दे गेट बाइंड टू द रिसेप्टर, और ये जो हार्मोन है along with the receptor, it is going to get engulfed inside the cell. So hormones, they are the one which is involved in cellular metabolism. They are involved in to control the cellular metabolism. So hormones जो हैं, they bind to the hormone receptor, and these receptor, they are present on the cell membrane, or you can say plasma membrane. और इस तरीके से जो स्पेसिफिक हार्मोन को रिसीव किया जाता है रिकग्नाइज करके, एंड द इंफॉर्मेशन इट इज कैरिड डाउन इनसाइड ऑफ द सेल। एंड हियर इस तरीके से जो है जो मेटाबॉलिज्म है सेल का देखने मिलेगा। हियर आल्सो यू कैन सी द हार्मोन्स, दे विल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड फर्दर information it is going to proceed, and here the processes conduction takes place. नेक्स्ट इज इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, हर एक सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। How? Because of the plasma membrane. So plasma membrane of multicellular organism, they mediate the interaction between the cell and its neighbors. So ये जो plasma membrane है, it allows cell to recognize and signal one another to adhere to exchange material and information. अगर ये एक cells एक दूसरे के contact में है, एक दूसरे के communication में है, तो आराम से ये exchange कर सकते हैं material का। जैसे कि ये सेकेंड डायग्राम देखिए, लुक एट दिस सेल, ये प्लांट सेल है, दिस इज वन प्लांट सेल, दिस इज अ सेकेंड प्लांट सेल। ये एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बिकॉज हियर देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रेजेंट, देयर इज एन इंटरेक्शन प्रेजेंट, एंड दिस interaction is called as plasmodesmata. That is why the molecules which are present in one cell, they get transferred into the another cell. Next function is that is transmission. जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन द नर्व, द इम्पल्स इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल, और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है, इट विल टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो नर्व सेल है, इट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Next is the endocytosis and exocytosis. There is transport of molecules or ions takes place inside the cell and outside the cell. That process is called as the endocytosis and exocytosis. In the form of vesicle, the transportation takes place. So this is how all the functions of plasma membrane work. And here the video ends, and thank you very much.